Focus to the biggest controversy brewing in our country. The Supreme Court on Thursday approved a retest for 1,563 candidates who were awarded grace marks in NEET examinations. But the politics over NEET continues to escalate even further. Now, Congress Chief Mallikarjun Kharge has hit out at the government for putting the future of lakhs of students at the stake due to its inaction. Kharge has also alleged a NEET scam and demanded a fair investigation under the supervision of the Supreme Court into this entire case. Hitting back at the Congress, Minister of Education Dharmendra Pradhan said that politicizing every issue is Congress's old habit. The minister in fact also accused Congress of spreading confusion which affects the mental peace of the students. Out of 4,500 centers, 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया। थोड़ी सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा सा वो है, पर कोई नहीं। अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हो गया उसको भूल के दोबारा से तैयारी करने की कोशिश करें, दोबारा से तैयारी करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पेपर दिया था तो 10 दिन की रिवीजन में हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अपने दम पर जाऊं कहीं, तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। What they feel right now, some relief from the Supreme Court, कुछ राहत है। Are you guys satisfied with the ruling? Not exactly satisfied, but yes, it has been a relief because जो ग्रेस मार्क वाला एक बड़ा इशू बन के आ रहा था, फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन टर्म यूज किया गया था, दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड दैट इज अ ग्रेट डिसीजन कि उन बच्चों को री एग्जाम देने का मौका मिल रहा है और ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन because the main issue which we are facing is the paper leak, due to which our ranks have been inflated to such a vast extent that we have ever imagined. That is why we need investigation. So your demand also, आपका भी डिमांड यही रहता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए सिर्फ उन चंद बच्चों की जिनकी बात करिए 1500 के आसपास बच्चों की, कि उनका री एग्जामिनेशन लिया जाए, या उन बच्चों को जो है ग्रेस मार्क जो मिले हैं वो कम करके उनकी फिर रैंक कैलकुलेट की जाए? इससे नहीं है संतुष्ट आप भी? सर बिल्कुल भी संतुष्ट है। 1563 की तो बात ही नहीं है, हमें तो सिर्फ नंबर दिया गया है जिससे हम घूम जाएं, और एक्चुअली में घूम गए हैं बच्चे। पेपर लीक का सबको पता थी, पटना पुलिस का सबको मामला पता है सब, तो लेकिन उन बच्चों को अगर उन्होंने पेपर लीक नहीं करा तो आप उनको बेल क्यों नहीं दे रहे हो? सीधी सी बात ही है। अगर फिर भी उनको किस उसमें जुर्म में अरेस्ट कर रखा, पटना पुलिस की वो FIR झूठ बोली है, पटना पुलिस झूठ बोल रही है, या आप झूठ बोल रहे हो, तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मीडिया वाले हो, आप एक बार पटना पुलिस जाइए। जैसे कल झांझर गए थे, झांझर पे जाके जब आपने प्रिंसिपल का लिया, प्रिंसिपल ने साफ मना कर दी कि हमारे यहाँ कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। तो टाइम लॉस नहीं हुआ इसका मतलब आपने तो कह दिया था 6 बच्चों को हमने 720 दिए क्योंकि टाइम लॉस हुआ, तो इसका मतलब इस पर क्या कहना चाहोगे आप लोग? आप तो स्टार्टिंग से झूठ बोले हो, हम कैसे भरोसा मान लें आपको? तो सीधी सी बात ये है, ये 1563 का मामला नहीं है, 15,000 भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं मिला अभी। और सीधी बात ये है कि हमें CBI की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, उसके बाद रीनीट हो, कुछ भी हो, हमें सब मंजूर होगा। Now, CNN News 18's Rahul Shivshankar spoke exclusively to J. Sai Deepak, who is in the Council of Students, on the future course of action. Listen in to what he has to say to CNN News 18. J. Sai Deepak, let me ask you, the NTA has given a detailed response saying that, look, it is addressing all the issues with regards to the concerns that have been raised.
do you believe it addresses the main doubts and grievances? So I think there are 2 or 3 different aspects which have been raised in multiple petitions, and I think it's important to understand the scope and the different allegations in the petitions. The first set of petitions related to the leak of the paper itself, the alleged leak at this point. And there appears to be some issue which deserves further scrutiny, because I think from what I gather, an FIR has also been registered, because it appears that certain candidates or certain candidates who were in close proximity to each other in terms of their roll numbers or whatever it is, and who were from the same center, managed to score similar or perhaps the highest possible marks, I think 720 or so. Then, of course, is the post-result aspect, when it was then realized that grace marks had been awarded without any basis whatsoever, on the ground that in certain centers there was loss of time to the tune of about 3 hours and 20 minutes. And therefore, to compensate for that, grace marks were awarded arbitrarily, to the extent that certain students who had originally scored about 630 or 640 were given 70 marks or 80 marks in additional scores in grace marks. And that resulted in them securing even the first rank, All India rank 1 in NEET. Now, the petition in which I appeared as the arguing counsel, I appeared for this gentleman by the name Alak Pandey, who was otherwise known popularly as the Physics Wala. He has appeared on behalf of 20,000 students, despite the fact that his own students, so to speak, who he has coached, some of them have secured the first rank, because clearly he understands the capability of students during their internal assessments and the ultimate outcome. So the primary thrust of his petition is, of course, the award of grace marks. The other thrust of the petition is the aspect of whether there was a paper leak or not, and whether this issue needs to be re-examined thoroughly. Mr. Deepak, are you surprised that the NTA never declared that it had given grace marks till the petitions were filed, actually? Some of the scores that have been awarded, I am told, are mathematically impossible going by the structure of the examination and its marking system. Okay, that's one. The second thing is, initially, the fact that grace marks had been awarded was not even informed until people started asking, what is the basis of the score? Then it was told that perhaps in one center, I think it is Savai Madhopur, they said that that was the place where there was loss of time, and based on the CCTV footage, they decided to extend the score. Then that was extended to 5 other centers. Totally, they said only 6 centers suffered from this problem. Whereas students are saying, you initially said no center suffers from the problem. Then you said only 1 center. Now finally your position is only 6 centers. Why don't you call for representations from candidates from the various centers to understand how many centers actually suffered from this particular problem, as opposed to coming out with a piecemeal solution where you're basically saying, we will extend the limited benefit that we are offering only to those candidates who approach the High Court. Time for a quick commercial break here on CNN News 18. Stay with us. We'll come right back.